आपने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाला, मगर हमने ज़रूरी इसलिए समझा कि आपको बुलाएं कि जो एक बिगड़ती हुई सूरत हाल है इंसानी हकूक़ की, उसके ऊपर हमने ज़रूरी समझा कि 1 जनवरी को हम आपको आगाह करें कि क्या क्या मसले हैं। तो मैं अपना तारुफ कराती हूँ। मुनीज़ जहांगीर, को चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ बैठी हुई है नसरीन अज़हर साहिबा, जो वाइस चेयर हैं इस्लामाबाद की, और गिलगित और बल्तिस्तान और कश्मीर को भी रिपोर्ट उस हवाले से वो करती हैं। उनके साथ आप जाना माना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब फरतुल्लाह बाबर साहब इस्टीम्ड काउंसिल मेंबर है हमारे साथ बैठे हुए। मेरी इस साइड पे अफरा सियाब खटक साहब बैठे हुए हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर रहे हैं और फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं। और मेरे इस साइड पे बैठे हुए नासिर जैदी साहब, जिनको आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, और आपको पता है कि ये सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और इलेक्टेड काउंसिल मेंबर भी हैं। तो आप सबको हमने इसकी तकलीफ दी। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ देती हूँ जो हमने बनाया है, मगर साथ साथ उसका तर्जुमा जो है नासिर साहब भी करते रहेंगे और मैं भी करती रहूँगी। The Human Rights Commission of Pakistan is deeply concerned by an overall deteriorating state of human rights in the country that need urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party amongst others, क्योंकि सिर्फ एक नहीं है और भी जमातों के साथ ये हुआ है, has been singled out for systematic dismemberment, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको जो है डिसमेंबर करने की कोशिश की गई है, उसको तोड़ा जा रहा है। While HRCP does not condone violence in any form by anyone, हम कंडेम करते हैं हर किस्म की दहशतगर्दी को या तशद्दुद को, मगर the state's response has been disproportionate and unlawful। जो स्टेट का रिस्पॉन्स रहा है ये डिस्प्रोपोर्शनेट रहा है और गैर कानूनी भी रहा है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ डील की है, जिस तरीके से लोगों को हिरासत में लिया गया, उनको चार्ज नहीं किया गया और उनको कैसे रिलीज़ कर दिया गया ये भी हमें नहीं पता चला। तो ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं किया गया इन केसेस के अंदर। दिस इज अज्यूम्ड अ फेमिलियर पैटर्न इंक्लूडिंग अरेस्ट ऑफ पार्टी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स, lack of transparency concerning the charges involved, crackdowns on party workers' right to peaceful assembly, enforced disappearances। ये भी हमने देखा है कि कैसे लोगों को उठा लिया जाता है अपने घरों से और फिर उनको हम नज़र आते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं कि हमने पार्टी छोड़ दी। Obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently the large-scale rejection of candidates' nomination papers। इसके अंदर हमें हैरत हुई कि कुछ कैंडिडेट्स के पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए जिनका ताल्लुक जो था कलंदम तंजीमों से था, मगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो एक सूबे के रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मगर उनके कैंडिडेट्स को उनकी नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया। Various political parties have been subjected to varying degrees। एक सियासी जमात के साथ नहीं हुआ, कुछ और सियासी जमातों के साथ भी हुआ है और मुख्तलिफ डिग्रीज के साथ हो रहा है। कईयों को ज़्यादा शिद्दत के साथ किया जा रहा है, कईयों को कम शिद्दत के साथ। At this point, there is little evidence to show that the upcoming elections will be free, fair, or credible। The rights of vulnerable groups have come under renewed assault by state and non-state actors in the past year। The wanton destruction of Christian and Ahmadiyya sites of worship, with severe damage caused to over 30 churches in Jadawala in a single day in August 2023, and increasing use of the blasphemy laws against religious minorities, has left these communities fearful for their lives and livelihoods, much less their right to profess and practice their faith। The genuine demand of the Christian community to hold an inquiry by judicial commission in Jadawala tragedy must be honored by the state, and the compensation should be given to the victims। Jadawala के केस के अंदर 10 JITs बनी, उनका क्या नतीजा निकला हमें बताया नहीं गया।
جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہی ہے مگر ان کو جوڈیشل کمیشن نہیں دیا گیا. دوسری طرف ان کو کمپنسیشن جو ہے معاوضہ بھی نہیں دیا گیا. کئی لوگوں کو ملا مگر زیادہ تر لوگوں کو ابھی تک معاوضہ نہیں ملا اور یہ وعدہ خود ریاست پاکستان نے کیا تھا. یہ وعدہ ان کو پورا کرنا چاہیے. We also call for the full implementation of the Supreme Court verdict of June 2014 in respect of minority rights. جو تصدق حسین جیلانی کی جو ایک ججمنٹ ہے اس کے اوپر ریاست کو فی الفور عمل درآمد کرنا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں کیا. اب بھی وقت ہے ان کو کرنا چاہیے. In violation of international conventions and without considering the safety and security in the country of the origin, the mass expulsion of vulnerable Afghan refugees and asylum seekers has put many women, children, elderly and disabled Afghan nationals at risk. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ کئی ہفتوں مہینوں سے چلا آ رہا ہے مگر جس طریقے سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور جن حالات میں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے ان کی جو ایک بیسک رائٹ ٹو لائف ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. The state of law and order, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, is a cause for serious concern. There can be no tolerance for militancy, for which the military must cede space to law enforcement agencies, while the government must ensure that the police have the training and resources they need to protect citizens' lives and property. The state must not allow the militants to gain strength by backdoor, non-transparent negotiations as happened last year. The state must ensure that merger and mainstream of FATA, which is an achievement, is not reversed. آپ کو یہ دونوں کام کرنے ہیں اگر آپ نے اس خطے میں امن لانا ہے. ایک کہ جو فاٹا کا مرجر تھا اس کو آپ یقینی بنائیں. آج بھی لوگوں کو انتظار ہے وہ کیوں واپس جرگوں پہ جا رہے ہیں کیونکہ مرجر یقینی نہیں ہوا اور نہیں بنایا گیا. یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ یقینی بنائے. اور دوسری طرف جس قسم کے انہوں نے انڈر ہینڈ ڈیلز کیے ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہاں کے لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو جن کے بچے جو تھے اے پی ایس اسٹریٹجی میں جو ہے اپنی جان گنوا بیٹھے. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی نیگوسیشنز جو ہیں جو نان ٹرانسپیرنٹ ہیں وہ نہ ہو اور جو ملیٹنٹس ہیں ان کو کوئی اسپیس نہ دی جائے. اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی لائف اینڈ پراپرٹی جو ہے وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اس کو سیو کرنا, اس کو یقینی بنانا اور ریاست پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. Finally, the state's clampdown on dissent, whether on freedom of opinion, expression or assembly, has further constricted civic spaces in the country at a time when people must express their will freely ahead of a national election. The recent crackdown on Baloch women protesters demanding an end to enforced disappearances and extrajudicial killings was a black mark on the state. Such repressive tactics must end. یہ کہنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جو ہماری بہنیں اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ کچھ امیدیں لے کے آئی تھیں. اس امید کے ساتھ آئی تھیں کہ ان کے پیارے ان کو مل جائیں گے مگر آپ نے ان کے لوگوں کو ہی لاپتہ کر دیا. یہاں پہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر لوگ آ کے اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو اجازت دیں کہ الیکشن سے پہلے وہ اپنے سیاستدانوں کو ریاست کو بتا سکے کہ ان کے کیا مسئلے ہیں تاکہ الیکشنز جو ہیں وہ واقعی میں ایک ایسے ایٹماسفیئر میں ہو سکے جہاں لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے اپنی بات سامنے رکھتے اس ملک کے مسائل سامنے رکھ کے جو ہے الیکشنز کریں. میں آخری پڑھ دیتی ہوں